नमस्कार। परख के आज के अंक में दीपक टेंगुरिया सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र गुहा के साथ एक इंटरव्यू प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर रामचंद्र गुहा से दीपक ने भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और संभावनाओं से संबंधित प्रश्नों पर बातचीत की है। दीपक दिल्ली विश्वविद्यालय के एक होनहार विद्यार्थी हैं। ये पूरे विश्वविद्यालय में एक अच्छे डिबेटर के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये भारतीय समाज और राजनीति के गहन प्रश्नों से लगातार जूझते रहते हैं। मुझे यह उम्मीद है कि दीपक की डॉक्टर रामचंद्र गुहा के साथ इस बातचीत से हमें भारतीय लोकतंत्र की पेचीदगियों को समझने के कुछ नए सूत्र मिलेंगे। परख की तरफ से मैं दीपक और डॉक्टर रामचंद्र गुहा दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आई वांटेड टू आस्क यू, सिर्फ अंग्रेजी में बोलो कि हिंदी हिंदी मिली जुली आपके ऑडियंस के लिए कौन सा बेहतर रहेगा? जी सर। सर वैसे हम ये चाहते थे कि गांव की रामवती काकी भी हमारी इस चर्चा को समझ पाए, तो अगर आप हाँ, अंग्रेजी में सुविधाजनक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी तो मतलब एक दो क्वेश्चन अगर आप अनुमति देते हो सर। ठीक है ठीक। नमस्ते। परख के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक टेंगुरिया। परख में आप मुझसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कमल नयन को देखते रहे हैं, जो कि किताबों पर आपसे विस्तृत रिव्यूज करते हैं और तमाम अवधारणाओं पर उन्होंने आपसे नारीवाद, लोकतंत्र, उस पर आपसे चर्चा की है। और आज इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं डी रामचंद्र गुहा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, धन्यवाद, बड़ी खुशी के साथ आया हूँ मैं। हाँ बोलिए। हाँ, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा प्रसिद्ध इतिहासकार और स्तंभकार हैं। आप उनके लेख देश विदेश की पत्रिकाओं में, अखबारों में पढ़ते रहे हैं। 18 पुस्तकों के लेखक डॉक्टर गुहा ने शानदार एक से बढ़कर एक पुस्तक लिखी है। द अनक्वाइट वुड्स, सैवेजिंग द सिविलाइजेशन, मेरी फेवरेट इंडिया आफ्टर गांधी, और गांधी की 2 वॉल्यूम की बायोग्राफी गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड और गांधी बिफोर इंडिया। इसके साथ ही कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड जैसी शानदार किताबों के लेखक, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फुकुका प्राइज और रामनाथ गोयनका अवार्ड। अगर कोई मिस कर गया हो तो माफी चाहूंगा सर। इतने देश विदेश के सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम इंडीड ग्रेटफुल एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव यू हियर सर। थैंक यू। मैं भी एकदम, जब तुम्हारा खत मिला मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं भी एक जमाने में, बहुत पुराना जमाना है कि एक जमाने में मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा था 5 साल के लिए। और वो जो मेरे जो 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी में जहाँ गुजारे, मैं अभी भी याद करता हूँ। आप कौन से कॉलेज से थे सर? मैं पहले सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था बीए के लिए, और फिर एमए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं सिर्फ अपने कॉलेज में ही नहीं रहता था, क्योंकि मैं क्रिकेट का भी खिलाड़ी था और हम अपने कॉलेज के क्विज टीम में भी था। तो हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामदास कॉलेज आना जाना रहता था। मैं अपने कॉलेज के लिए क्रिकेट खेलता था और हॉस्टल टीम के लिए टेबल टेनिस। तो मैं पूरा कैंपस अपना मानता हूँ। तो उसके बाद मैं कई सालों बाद में पीएचडी के लिए मैं वैसे तो कलकत्ता गया, उसके बाद कई साल में दिल्ली में काम कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो बिल्कुल किरोड़ी मॉल कॉलेज के पीछे जो है। तो मैं कहूँगा माय हैप्पीएस्ट मेमोरीज आर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरे जो राय हैं, मैं तो ये नहीं मानता कि मेरा फिलॉसफी है। आई हैव एन एटीट्यूड टू लाइफ। माने जीवन को कैसे देखते हैं, समाज को कैसे देखते हैं, और ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीखा कि किसी का जातवाद का विरोध करना, दैट वीमेन शुड गेट इक्वल राइट्स, और कि ये जो हमारा देश है अन्य धर्मों का है और अन्य भाषाओं का, सिर्फ एक धर्म और एक भाषा का नहीं। आप किसी व्यक्ति को उसी व्यक्ति को उनके इंडिविजुअल ट्रेड से देखें, उनका बाप कौन है, उनका परदादा कौन है, वो बिल्कुल नहीं, उसका दैट हैज नो मीनिंग। तो ये सब जो एटीट्यूड टू लाइफ जो मैंने सीखा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सीखा और कहीं नहीं। Okay. This attitude is making trouble for Rahul Gandhi nowadays. Huh? I have seen this attitude of dynasty is making trouble for Rahul Gandhi nowadays. I have seen in the list of articles. That's right. Okay, let's start. Dr. Guha, I'll begin this interview. We are discussing here समकालीन संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र का भविष्य. For our English viewers, I want to translate this in English. The future of Indian democracy with context to contemporary times. Dr. Guha, I'll begin this interview by asking you, in 2007, on the eve of 60th independence,
you stated that India is a 50-50 democracy, in which you mentioned certain parameter, of course, that there are caste-related gender violence. It is 50 not democratic, but 50 democratic of the election and free and fair movement of people. Later on, 12 years down the line, just last year in 2019, you mentioned that India is a 40-60 democracy. Then you mentioned later on that India is a 30-70 democracy after the verdict of, the poor developments of 5 August of Jammu and Kashmir. Dr. Guha, I'll ask this. Sitting in September 2020, in the morning of September 2020, what is your verdict on the state of Indian democracy? Well, these verdicts, like if you say something is 50-50 or 30-70, they are not supposed to be mathematical judgments. They're supposed to be symbolic judgments, metaphorical judgments. That when you say 50-50 democracy, it means India is a democracy but not perfect. Of course, there is no perfect democracy, but Sweden or Canada, where institutions are better run, where there's less corruption, maybe 70-30 democracies. So it was a kind of, since a way of capturing the status of India. Today we have declined, certainly in terms of our institutions. If you take 3 or 4 institutions in particular, the faith in the Supreme Court has steadily declined over the last 10 years. Our media is completely compromised, nervous, scared, with a few exceptions. Of course, there are some brave websites, some brave journalists, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं जो बहुत ईमानदार भी हैं और बिल्कुल बहादुर भी हैं, लेकिन by and large the media is either totally सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की चापलूसी करती है मीडिया, या माने unimportant things पे ध्यान देती है. That why should there be so much coverage of a tragic suicide, however tragic it was, of a Bollywood actor? So the media is not providing. A media is supposed to provide a window to society. It is supposed to tell you all the problems that the society faces, so that the government and the people can correct those problems, overcome those problems. The Supreme Court is supposed to provide an independent check on the excesses of the government. Our investigative agencies are not supposed. I was saying that when you use a measure like 50-50, it is metaphorical. It is not supposed to be exact. And certainly in the last 10 or 12 years, several of the institutions of democracy have declined. So the judiciary, trust in the judiciary is certainly much lower than it was 10 or 12 years ago. The judiciary is seen as taking the side of the government. Scholars have described it as an executive court. I myself have said it is in danger of becoming a collaborationist court. The media is too deferential. It builds up the cult of the Prime Minister. It does not critically scrutinize the policies of the government. Investigative agencies act at the behest of those in power. A parliament barely functions. The Prime Minister has not given a press conference in 6 years because he only believes in one-way communication. And I think many of the problems we are facing today, yesterday, 31st August 2020, was a very bad day for the government. Some of your listeners are students of literature. They know the works of William Shakespeare. And William Shakespeare, in his play Macbeth, has a famous line, "Beware the Ides of March." आप 15 मार्च को सावधान से देखिए, उससे डरिए, because many bad things happened on the 15th of March. For this government, it is the 31st of August. So कल 31st August, we see the bad news. Highest number of COVID cases in the world. Economy down 23%. Narendra Modi's personal popularity for the first time took a dent because his Mann Ki Baat got so many dislikes. BJP IT cell could not. That is 3. So highest number of COVID cases in the world. Worst moment ever for the Indian economy, down 23% in this quarter. The Prime Minister, in 6 years in power, he has never faced a backlash from young people as he did with his last Mann Ki Baat. Fresh Chinese incursion in Ladakh. It's a very bad time for the country, and many of these causes go back to the damage done to democratic institutions by the current Prime Minister. Any leader needs a feedback loop. If you are a principal, अगर आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ बिल्कुल लाइक अ डिक्टेटर में चला सकता हूं. आपको फीडबैक लूप हिंदी में क्या बोलेंगे कि प्रतिक्रिया
क्रिटिसिज्म आना चाहिए कि आपके जो टीचर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे आप उनसे पूछिए, उनसे सुझाव लीजिए. So every leader needs a feedback loop. A cricket captain has a coach, a batting coach, a bowling coach, selectors. Our prime minister has no feedback loop. He only has, मैं कहता हूँ, चापलूसी loop. सिर्फ वो लोग जो उनके आसपास है सिर्फ बोलते हैं मोदी जी आप तो यू आर द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड वगैरह वगैरह. और इसीलिए अगर हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस दें तो वो सच समझेंगे देश की क्या स्थिति है, वो समझ पाएंगे. सो what I try to say is, if democratic institutions decline, if free information is not available, then governance will also suffer, because you are in a bubble. You are in a bubble. You don't know what the truth is. I mean, so I think democracy is good not only for freedom of expression, not only for individual rights, but for good governance. Truth and information, as they say, truth is the best disinfectant. You need the light of truth, and you can't manufacture falsehoods through WhatsApp universities. You may win an election. You may manufacture falsehoods through WhatsApp. You will win an election in Bihar, but Bihar will be so badly run. Yeah, बोलिए. हाँ. डॉक्टर का मेरे क्वेश्चन से इतना था, ये 30-70 का जो वर्डिक्ट है, आप अभी तक इस पर कायम है? आपको मानते हैं, आप ये मानते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा नीचे चली गई है? मैं मानता हूँ कि अगर आप तुलना करें 2007 से तो हमारी स्थिति अब गंभीर हो गई है. और इसका जो आप नतीजा देखेंगे अर्थव्यवस्था में ही, मे बी द इकोनॉमिक फिगर्स, द हेल्थ फिगर्स, नॉट जस्ट इन फ्रीडम, एंड the answer of the government to criticism is to take revenge. धमकी देना, टैक्स केस शुरू करना, जेल में डाल देना. I mean, it is an absolute scandal that someone like Sudha Bhardwaj, who has spent her whole life working for Adivasis, is in jail. It is an absolute scandal that Anand Teltumbde, who is one of our preeminent Dalit intellectuals and a great scholar of Baba Sahib B.R. Ambedkar, is in jail. Neither of these people has ever preached violence. ये बिल्कुल अहिंसा से ही अपना काम कर रहे हैं, करते रहे हैं जो भी उन्होंने काम किया है. So this is all speaks very poorly of the state of Indian democracy today. Okay, डॉक्टर का my second question towards you as a historian, आप ये देखते हैं कि सबसे फेवरेट होता है what if, अगर ये ना हुआ होता और अगर ये ना हुआ होता. मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप जब इतिहासकार के तौर पर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को देखते हैं तो आपको कौन से ऐसे हिस्टोरिकल लूप होल्स नजर आते हैं कि अगर ये ना हुआ होता, यहाँ से बीज ना पड़े होते, तो इसका वटवृक्ष इतना ज्यादा गंभीर और दुष्कर ना हुआ होता, इतना कठिन ना होता? हाँ, तो एक तो है, मैं मानता हूँ, ये तो देखिए जो हुआ वो हुआ, उसको आप बदल नहीं सकते हैं. यू कैन नॉट रिवर्स द फ्लो ऑफ हिस्ट्री. वो हुआ हो गया. बट इफ यू लुक एट इट, आई वुड से प्रोबेबली द अर्ली डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. दो चीजें मैं कहूंगा. the most important historical event that was unanticipated, ये नहीं होना था कि शास्त्री जी की उम्र करीब 60 से 1902 he was born, he died 65, he was 63. So 63 is a relatively young age. So and Shastri was a remarkable person. I should tell young people something about Shastri. Let me speak for a few minutes about Shastri, because he is forgotten and WhatsApp University has told a lot of lies about him. Shastri, first of all, Shastri was chosen by Nehru to succeed him. Nehru did not want Indira Gandhi to succeed him as Prime Minister. He wanted Shastri. Firstly, okay. आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं इस पर आपसे थोड़ा सवाल छोटा सा कर रहा था, इसी लाइन पर ही. सर, आपने कहा कि इंदिरा गांधी को नहीं चाहते थे कि नेहरू जाएं, लेकिन मेरी सीमित बहुत छोटी सी पढ़ाई में हमने पढ़ा कि नेहरू ने जो उन्हें अध्यक्ष बनाया, जो शक्ति प्रदर्शन केरल में किया गया, इसके बरक्स वो चाहते थे कि इंदिरा भी राजनीति में आए. तो क्या ये तथ्य है या राजनीति में थे? इंदिरा राजनीति में थी. इंदिरा जेल भी गई, इंदिरा स्वतंत्र संग्राम में भी थी और कांग्रेस में भी शामिल थी और एक साल वो कांग्रेस की राष्ट्रपति रही 1958-59. लेकिन उसके बाद 59 के बाद वो उन्होंने राजनीति छोड़ दिया और वो अपने बच्चे का देखभाल कर रही थी. तो 60 जब नेहरू जी बीमार हुए थे सन 63 में, 63 में इंदिरा गांधी बिल्कुल राजनीति में नहीं थी और नेहरू ने शास्त्री को कैबिनेट में शामिल किया. वो बाहर गए थे. शास्त्री तो
जब वो रेलवे मिनिस्टर थे और रिजाइन किया उन्होंने एक्सीडेंट के बाद, लेकिन नेहरू जी ने उनको वापस लाया कैबिनेट में, वो उनके राइट हैंड मैन बने। और नेहरू जी ने ये साफ सबको साफ था कि, और इंदिरा जी कहीं नहीं थी। इनफैक्ट इन अर्ली 1964, few months before Nehru died, Indira wanted to move to London to be with her sons. She wanted to go to UK and leave India. That is the truth. Anyway, so Shastri was, firstly, he was Nehru's chosen successor. Secondly, he imbibed all the right values of Nehru. He was totally secular. When we went to war in 65 against Pakistan, when there was a war in Pakistan, जब 65 में जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, शास्त्री जी ने रामलीला मैदान में एक भाषण दिया जब युद्ध चल रहा था हमारी सीमाओं पे। और इस भाषण में वो गए, उन्होंने आम जनता को बोला, मेरे दाहिने हाथ हैं मीर मुश्ताक अहमद जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और मेरे और दूसरी तरफ हैं श्री फ्रैंक एंटनी जो एमपी थे, जाने माने लॉयर, कि ऑन हिज लेफ्ट वाज अ मुस्लिम और हिज राइट वाज अ क्रिश्चियन एंड ही वाज अ हिंदू एंड ही सेड दिस इज इंडिया, दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी ऐसा भाषण दे सकते हैं? आप बताइए। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था, उन्होंने रामलीला मैदान में एक भाषण दिया शास्त्री जी ने, जहां उन्होंने कहा मेरे एक तरफ है मेरे मित्र मीर मुश्ताक अहमद, दूसरे तरफ है मेरे दूसरे मित्र फ्रैंक एंटनी, और पाकिस्तान और हमें ये अंतर है कि अयूब खान के दोनों तरफ सिर्फ उन्हीं के धर्म के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, और कोई नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग हैं। ये है शास्त्री की खासियत, पहली बात। और ये उन्होंने नेहरू जी से सीखा, गांधी जी से सीखा, कहीं और किसी और से नहीं सीखा, पहली बात। दूसरी बात, शास्त्री laid the foundations of the Green Revolution. Shastri had a very good agriculture minister, C. Subramaniam, from South India, who was a farmer himself. And C. Subramaniam was agriculture minister, and Shastri laid the foundations of the Green Revolution. Thirdly, Shastri modernized the defense forces. You know, after the humiliating war with China in 62, Shastri, Nehru got Y.B. Chavan into the ministry as defense minister. And Shastri worked very closely with C. Subramaniam in bringing Green Revolution agriculture, and he worked equally closely with his defense minister in modernizing our forces. Lastly, Shastri also believed in opening up the economy. He realized that now you have to encourage entrepreneurship. State control cannot revive the economy. So he was a remarkable person, and he was a team builder. It was not sirf main hu, just Narendra Modi, only me. Have you ever heard Narendra Modi praise any of his ministers? No, it's all about himself. Bad news somebody else has to take. Good news, he will take all the credit. So Shastri was a great leader, and he was, if he had not, he died purely through natural causes. Now there are all kinds of conspiracies, but he was a true congressman, a true disciple of Gandhi and Nehru, who believed in an inclusive, plural, tolerant India. He did not believe in a Hindu Rashtra at all. He was a modernizer. He laid the foundations of scientific agriculture, and above all, he was a team builder. He was not a megalomaniac who wanted a personality cult. That is Indira Gandhi, who started that, and now Modi has taken it a level further. So if you ask me, last just to summarize, Gandhi was murdered by a fanatic. He died young. Subhash Bose died in an air crash. So several of our great leaders died untimely deaths before their time. But the untimely death, the premature death that may have affected our democracy the most was the death of Shastri. Because when Shastri died, Indira Gandhi was a minor person in Indian politics. The so-called leadership of the Congress thought they will bring her as a reconciling figure. And of course, she became a monster and promoted her own children, started the dynasty cult. In fact, I wrote in an article many years ago that if Shastri had lived another 5 years, Rajiv Gandhi would still be alive, living on his Indian Airlines pension.
because he was and Rahul Gandhi would be working in a company as a manager. I wrote this, and we would all be much better off, because the curse of the Congress is that dynasty, right? So Shastri is a really underrated prime minister. And again, before we move to other subjects, I'd like all your listeners to focus on that extraordinary speech he gave during the India-Pakistan War of 1965 at the Ram Leela Maidan, where he said the difference between India and Pakistan is that on my left is Mir Mushtaq Ahmed and on my right is Frank Anthony. That is India. Okay. So Dr. Guha, this is my personal question to you, and this question is popular going from years. I am a 20-year-old kid, was born in the new millennium, at the beginning of new millennium on August 2000. I just completed my 20. डॉक्टर गुहा, आप हमारी जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कंधों पर सौंपना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र के लिए? आपके व्यापक अनुभव से बताएं। देखिए, मैं तो लेखक हूं और मैं मानता हूं कि मैं लिख सकता हूं, मैं अपने इतिहास पे लिख सकता हूं। आजकल क्या हो रहा है उस पे भी मैं अपने शोध के अनुसार से मैं लिख सकता हूं। आई कैन यूज माई नॉलेज ऑफ द पास्ट टू इल्यूमिनेट द प्रेजेंट। लेकिन राय देना, एडवाइस देना, सलाह देना ये मेरे लिए नहीं है। मैं जो आप मेरे लेख पढ़िए और आप स्वयं सोचिए कि ये गुहा जी जो बोल रहे हैं, does it make any sense? Is it telling me something new about my country? Is it opening my mind? Or is he talking rubbish and I want to read somebody else? Because I have to say, so the job of a writer is to illuminate, to educate, but not to prescribe. Okay. मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा जीवन जिए। देखिए, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मेरे पास खुद के 2 बच्चे हैं, उनकी उम्र तुमसे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं उनको कुछ सलाह दूं, मुझे नहीं मानेंगे, बाप की सलाह नहीं मानेंगे, because they are adults, they will do what they want, right? So all I would say, the only advice I would give the young people, is linked to what I told you about Shastri. India's greatness is its diversity and its pluralism. Do not narrow and homogenize this in pursuit of some fantasy of a Hindu Rashtra. A Hindu Rashtra will destroy India. It has already damaged India enough. We must respect our diversity, our pluralism. We are not a country meant to promote one religion, one language, one leader, one party, not at all. So that's our greatness. That is what Gandhi and Tagore particularly, and Baba Saheb Ambedkar believed in. The second thing I would say is that I would tell young people is that we remain apart from our democracy, which I've talked about, which is flawed and imperfect, we are also a flawed and imperfect society. And particularly, Dalits and women are still discriminated against. Caste and gender are 2 axes of discrimination that remain in India. We have made some limited progress, but we have to continue to bring more, attention to these. Every upper caste male has to recognize how privileged he is compared to, in terms of caste and gender. And that is something which is we are still a very, very patriarchal society. And I think that is something, less so in Delhi University, maybe compared to some other universities outside. I'm sure in Bihar and UP and Madhya Pradesh, women are oppressed much more. And myself belong to Rajasthan. Rajasthan also. So I think this is what I would tell young people. Respect and embrace Indian pluralism. And secondly, be aware we are still a work in progress. There are many fault lines. And in your daily encounters, do remember how to treat every individual with respect, and recognize that some particular groups, Dalits and women particularly, are subject to serious social disabilities that go back thousands of years. The RSS promotes nonsense in terms of history. They claim that the Muslims brought the caste system into India. That is total nonsense. The Vedas prescribed caste. The Vedas prescribed caste. Our temples excluded Dalits
and that had nothing to do with Muslims. Our scriptures say, likewise, even the RSS talks nonsense when it comes to history. Discrimination against Dalits is part of Hindu tradition, and Hindus must rise to oppose it. There's a serious problem in making religion and scriptural texts the basis of social behavior today. Religion is a private affair. मैं अपने घर में पूजा करना चाहता हूँ, ठीक है. मैं अपने घर में कुरान पढ़ना चाहता हूँ, वो भी ठीक है. लेकिन religion should not be brought into politics and social life. That is a problem. Okay. Dr. Guha, you wrote a piece the other day I was reading, and I always read you in NDTV. You stated that if Indira Gandhi used a blunt khurpi to undermine institutions, Narendra Modi is using sharp sword. May I please ask you, what are the stark contrasts and what are the analogies, similarities you find between Indira Gandhi and Narendra Modi and the state government? So, first, the similarities. Narendra Modi is self-made. He comes from a very humble origin. Indira Gandhi was born into the aristocracy. Her father was a prime minister. Her grandfather was a very wealthy lawyer. So Narendra Modi had to struggle at every level, firstly. But the other so there's one similarity that is to Narendra Modi's advantage, that he is totally self-made. He did not get anything on the basis of his birth. But there's another difference that is to Indira Gandhi's advantage. That Indira Gandhi was like Shastri. She was plural. She did not believe in, a Hindutva view of the world. I mean, among the reasons she was murdered was she said, so what if my bodyguards are Sikh? I will not, from a different religion. Allowed. But there are still many similarities. The desire to concentrate power in themselves, to identify the party with themselves, the government with themselves, and the nation with themselves. So the Congress is only Indira, the government was only Indira. She also did not allow cabinet ministers to grow. I talked about how Shastri had a team. He had Y.B. Chavan, Moraji Desai, C. Subramaniam, outstanding cabinet ministers and he gave them full credit and full freedom to develop their own portfolios. Right. Now, Indira Gandhi never trusted any other cabinet minister. And you always had to be nervous कि अगर मैं ऐसा करूं तो कल मुझे यहाँ transfer कर देंगे, so and so on. Similarly with Narendra Modi, right? Now, and a great leader is someone who nurtures a team working with him or her and allows those people to develop and become leaders in their own right. That is what Mahatma Gandhi did. Mahatma Gandhi trained Nehru, Patel, Rajaji, Kamraj, Kamala Devi Chattopadhyay, and they all became great leaders and did remarkable things on their own, right? So this is some of the similarity. Insecurity, megalomania, personality cult are all the similar subversion of institutions are great similarities. And I said in that same column which you refer to in NDTV, I said Narendra Modi is Indira Gandhi on steroids. Steroids. Okay, that is Indira Gandhi plus. So there are many striking similarities. Of course, when I say this, neither the BJP likes it nor the Congress likes it. Right? Sonia Gandhi will not like me to say Narendra Modi is merely a worse version of Indira Gandhi. Right? Yeah. But that's the truth. As a historian, I see many parallels. And one should contrast Indira Gandhi with Shastri, who came just before her. And one can contrast Narendra Modi with Vajpayee. So Vajpayee also was a team builder. He had many ministers. I mean, of course, there was Advani and Kochi, but there was Yashwant Sinha, Jaswant Singh, Mamta Banerjee, George Fernandes, right? So he didn't make it all about himself. You would not see his photograph everywhere, as you would with Narendra Modi, right? He would not be doing Man Ki Baat about himself, having a personal website promoting his great achievements. Which are mostly, fantasy rather than real achievements. So Vajpayee and Shastri recognize that running a cabinet in a complex country like India, running a government in a complex country like India requires a team who you can work with. Indira Gandhi and Modi think it's all about themselves. So contrast Modi to Vajpayee and Indira Gandhi to Shastri, and then you will see the similarities between Indira Gandhi and Modi, although one is from the Congress and one is from the BJP. Okay.
Divided by party, united by characteristics. Yeah, exactly. Okay, so Dr. Guha, my next question towards you is, and this is question I was trying to ask from the 2017 when I taken admission in Delhi University in first year. डॉक्टर गुहा, जैसा कि आप देखते हैं आजकल लिबरल्स बहुत निशाने पर, हर चीज पे लिबरल खाएं हल्ला मचता रहता है सोशल मीडिया पर, मैं आपका ट्विटर हैंडल खुद देखता हूँ। डॉक्टर गुहा, जब आप भारतीय बुद्धिजीवियों को देखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आई नो यू हीट टू प्रिस्क्राइब, बट आई वांट टू आंसर फ्रॉम यू एज यू योरसेल्फ कम फ्रॉम द टेक वर्ल्ड, कि भारतीय बुद्धिजीवियों को अभी भारत के लोकतांत्रिकरण के लिए और आगे किस तरह करना चाहिए, किस तरह समाज को दिशा, मतलब आपको लगता है कि ये दिखानी चाहिए, ये किया जाना चाहिए था? नहीं, जैसे मैंने कहा, आई डोंट वांट टू प्रिस्क्राइब। जो मैं सिर्फ आई वर्क एज ए इंडिविजुअल स्कॉलर एंड राइटर। मैं जो लिखता हूं मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, और मैं लेकिन जो भी मैं लिखता हूं, लिखने से पहले सोच, समझ, ध्यान, शोध, कभी अक्सर फील्ड वर्क, पैंडेमिक से पहले मैं पूरे भारत में घूमता था, लोगों से मिलता था, गांव में भी जाता था, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, हर जगह जाता था। तो जो मैं लिखता हूं ये सिर्फ मैं सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं लिखता हूं, कुछ रिसर्च करने के बाद लिखता हूं, लेकिन ये मेरे मन से, मेरे ध्यान से, मेरे सोच से, मेरे समझ से, मेरे रिसर्च के से आता है। एंड बट दैट इज व्हाट आई हैव टू से। आई कैन नॉट टेल सम अदर इंटेलेक्चुअल यू डू दिस, यू डू दैट, वो गलत रहेगा भाई। तो I believe that the job of a writer and a scholar is to protect and their own autonomy. So for example, I never George Orwell, जो एक जाने माने लेखक थे, जॉर्ज ऑरवेल 1984, जॉर्ज ऑरवेल बहुत जाने माने लेखक थे और जर्नलिस्ट भी थे, पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी थे। उन्होंने कहा कि राइटर शुड नेवर बिकम अ लॉयल मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि जो बुद्धिजीवी है या लेखक है उसे पार्टी का मेंबर नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो पार्टी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो मैं रहता हूं बेंगलोर में, और बेंगलोर दिल्ली से बहुत दूर है, और इसका दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज। इस दूरी से मुझे कुछ स्वतंत्रता मिलता है, आई गेट इंडिपेंडेंस, एंड आई नेवर मीट अ पॉलिटिशियन इन दिल्ली। आई गो टू दिल्ली, इफ एनीवन वांट्स टू मीट मी, दे हैव टू कम टू बेंगलोर, एंड आई डोंट मीट देम इन देयर हाउस, आई मीट देम इन अ फेमस कॉफी हाउस कॉल्ड कोशीज। और कोशिश में मैंने आरएसएस के लोगों से भी मीटिंग करवाया है, कांग्रेस के लोगों से भी, हमारे मार्क्सवादी लोगों से भी, कई लोगों से मैंने। और मैं मानता हूं कि द जॉब ऑफ अ राइटर इज टू मेंटेन हिज और हर ओन इंडिपेंडेंस, एंड देन दे कैन टेल द ट्रूथ, एंड बट नॉट प्रिस्क्राइब। द ओनली एडवाइस आई वुड गिव टू young people like you and others is cultivate an interest in as many languages as possible. Every language is a window to the world. If you ask me, अगर आप मेरे से पूछें कि what are the regrets you have, okay, what I have, मैं ये कहूंगा कि मेरी जो हिंदी है ये थोड़ी कमजोर है। मैं हिंदी में बातचीत कर सकता हूँ, हमारे दोस्तों के साथ बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक लंबा भाषण नहीं दे पाता हूँ हिंदी में। और मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, अपने रिसर्च के लिए मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं खुद लंबे लेख नहीं लिख पाता हूँ हिंदी। और आप देखेंगे मैं सिर्फ अंग्रेजी में लिखता हूँ, अंग्रेजी में लेख लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि कोई जाने माने कोई हिंदी का लेखक हो, वहां भी आप देखिए ज्यादातर जो हिंदी के लेखक हैं सिर्फ हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में नहीं। दो भाषाओं में लिखने वाले, सोचने वाले, बहस करने वाले कम है। जैसे योगेंद्र यादव जी है, वो कर सकते हैं, या आप और भाषाओं में देखेंगे। गुजराती एक बहुत जाने माने गुजराती लेखक हैं त्रिदीप सुरुत, जिन्होंने गांधी में भी अच्छा किताब लिखा है, गुजराती में भी, हिंदी में भी। और हमारे तमिलनाडु में एक मेरे मित्र हैं, बहुत ही सबसे मशहूर तमिल इतिहासकार, उनका नाम है A.R. वेंकटाचलपति। वो तमिल और अंग्रेजी में दोनों में लिखते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं बुद्धिजीवी जो लेकिन एक जमाने में ऐसे लोग, I was saying that bilingual intellectuals, बुद्धिजीवी जो एक भाषा से ज्यादा में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, एक जमाने में ऐसे कई थे। गांधी जी अंग्रेजी और गुजराती दोनों में लिखते थे, सोचते थे। B.R. Ambedkar wrote books in English and in Marathi.
right? Savarkar wrote in Marathi and in English. Tagore wrote in Bangla and in English. And so I would tell young people, if you are from, shall we say, Rajasthan, like you are, Yeah. you come to Delhi, improve your English, but don't forget your Hindi. Sure, sir. Okay, maintain that as well as possible. If you are from modern school in Delhi, you are from an English speaking family, learn Hindi or Tamil or Marathi or Urdu, and because every language is a window to the world. So the more languages you know, the more your world becomes larger and wider. I think that is what the only piece of advice I would give young people in terms of how to become better intellectuals or writers or thinkers. So, Dr. Guha, this question is from my mind from months. जब आप भारतीय इस लोकतंत्र की व्यवस्था को देखते हैं या इस भारतीय लोकतंत्र को देखते हैं, हम बुद्धिजीवी से आशा करते हैं कि वो में पेश आ गए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने एक पीस में लिखा कि one cannot say India is a functioning democracy anymore under परिलाप दृष्टिकोण में। तो आप अब इसके समाधान की दिशा में किसकी तरफ देखते हैं? कम से कम इतना तो आप बता सकें प्लीज हमें कि अब ये समस्या जो आ गई है, इसका निराकरण किस तरह से होगा, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? अब सवाल पूछे फिर से। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अब चूंकि आपने बताया और वाकई ये स्थिति चिंताजनक है, हमने बीते दिसंबर में उसको कुछ देखा भी था। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर गुहा कि अब ये जो परिस्थिति आई है, इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है? ये आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए भले आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एज अ कंट्री जी मैं तो सिर्फ इसका माने डायग्नोसिस दे सकता हूँ. I can tell you what has happened. I can also say that we have been through bad times. We had a bad time. We had an emergency. In the 1960s, we had 2 wars with China and 62, Pakistan 65, scarcity, famine, insurgencies in Nagaland, Kashmir, Punjab. So the Republic has seen difficult times and come out of it, but only through wise leadership and remembering the principles on which the Republic was founded. Not on chasing some elusive utopia or becoming a great Hindu Rashtra. I mean, I think that is something we have, or in placing all our hopes in one leader. That Indira Gandhi will save us, Narendra Modi will make us a superpower. That is not the way to get us out of the mess. Even today, if Narendra Modi was to hold a monthly press conference, not daily, so monthly, scrutiny. In which, you know, and let रवीश कुमार chair it. मैं कहूँगा कि रवीश कुमार को मॉडरेटर बनाइए, कि वो हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं, और आप मारे जैसे कि कोई जाना माना, कोई some well-known economist, some legal expert, right? So if they were there, and you have 8 or 10 really fine intellectuals who can ask Narendra Modi, who have done good grassroots work. You know, there's some very good female journalists, by the way. Some of our best journalists are women. You know, if you look at the work of Neha Dixit or Supriya Sharma, who write on working class, आप इन लोगों को लाइए, one young, smart women journalists, someone from the northeast. कि आसाम में आप ये देखिए, आसाम में इतने कितनी गंभीर स्थिति है. The floods are so bad. हार्ड जो सत्यानाश के लोगों के जीवनों का. Get someone to have, I would say with Zoom you can do it. Have an open press conference and you will learn and you will become a better prime minister if you take this feedback. You know, every day, not every day, once a month, and you will find that if you have some outstanding journalists or scholars or legal experts or activists with the Prime Minister, they will respect the office of the Prime Minister. प्रधानमंत्री का आदर करेंगे, समझ से प्रश्न पूछेंगे, ये नहीं कि ऐसे, they will not use the language of Facebook or Twitter or WhatsApp. They will ask a proper question and tell you this is what is happening in Assam, this is what the floods have caused, this is what is happening to our small and medium industries, you know, and I think this is very, very important. You know, the Prime Minister, we still don't know, does he have a degree? Yeah, you are from Delhi University, I am from Delhi University. The Prime Minister claims he has a degree from Delhi University. Has anyone seen the certificate? Show it to us. So believe in us. You know, trust and transparency, openness to criticism will make our Prime Minister a much better leader, and the country will benefit from this kind of activity. So we need more democracy, more transparency in order to have better governance.
Okay, thank you. Just a question, if I may, if you please permit me, I can ask you, what are you writing next, Dr. Guha? Because there are lots of people who are asking me this question. Right. So I say that I'm glad you turned to my writing. I have one book that is coming out in November, which is a history. It is how do I put it? It is a story of my life as a cricket fan. Okay. So I'm As now a cricketer, 62. So it's a story of 6 decades of engagement with the game of cricket. So it's about my engagement as a player, a writer, a fan, also the administrator, because I spent several months in the BCCI and I saw many things from inside. So my next book is a kind of popular book about the game of cricket, and now it has touched many parts of India. So I grew up in Dehradun. I played cricket in Dehradun. Then when I played cricket for St. Stephen's, 2 of my teammates went on to become test cricketers, Arun Lal and Kirti Hazard. Then, of course, I played in Bangalore. I knew the cricketers, so it's got stuff on Kumble, Dravid, Srinath, Vishwanath, Bishan Bedi, great foreign cricketers. So it's a celebration of the game of cricket as conveyed by someone who has lived his whole life with cricket. I was a cricket fan before I became a scholar, right? Now, and a cricketer. So that's one book that is coming out in November. Another book which is much more serious and which is the work of a scholar will come out in 2022. It's a book about foreigners who joined the freedom struggle. Dr. Guha, about can you repeat this? English and American men and women who joined the freedom struggle. Yeah. Hello. Please repeat. So I've written my next book is a book on cricket. Hello. Okay. So So my next book is a fan's book on cricket. The book after that, which will come in 2022 to coincide with the 75th anniversary of Indian independence, is a book about foreigners who joined the freedom struggle. विदेश के लोग जो हमारे स्वतंत्र संग्राम में शामिल हुए और जो जेल गए और यहाँ पे माने वो भारतीय बन गए, उनका जन्म इंग्लैंड में था, अमेरिका में था, लेकिन यहाँ आए और भारतीय बन गए और यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया. People who work for women's rights, environmental protection. So to show, this is a book to show that you should welcome foreigners who do good things. Today we live in a time of in India, but in America too. Trump says every foreigner is bad. We must, as Tagore told us, we must glory in the light of a lamp lit anywhere in the world. जहाँ पे भी मोमबत्ती की रोशनी है, जहाँ पे भी हो, किसी भी देश में हो, वो हमारा है. It belongs to all of humanity. So I've written a book about remarkable foreigners who joined our freedom struggle and did amazing things. Some are well known, like Annie Besant. Others are less well known. I don't know whether any of your listeners are from Kumaon. But in Kumaon, there is an organizational... I myself, I have lived in Kumaon. I spent my 11 years in Almora district. Yes, sir. My father's job was there. So you were in Almora. So just north of Almora is Kausani, the town of Kausani, from where the great poet Sumitra Nandan Pant came. Switzerland. And in Kausani, there is a Lakshmi Ashram, which has trained many remarkable social workers. And this Lakshmi Ashram was set up by an English woman called Sarla Bain, whose original name was Catherine Mary Heidemann. So she's in my book. Sarla Bain was an English woman who joined Gandhiji. Gandhiji sent her to Kumaon. She joined the 1942 Quit India movement, went to jail. A white woman jailed by white British rulers came out of jail, set up the Lakshmi Ashram and stayed there till the 1980s and trained generations of social workers and inspired the Chipko movement. The Chipko Andolan was inspired by this white English woman who made her home in Kumaon. So my next book is about such people, remarkable foreigners who contributed to Indian public life. Right. And so that will come out in 2022. These are my 2 book projects, one on cricket and one on India's encounters with the world. Yeah. Okay, Dr. Guha, I'm wishing you from the core of my heart all the love, luck, and light for your next upcoming books. And you can just can I just end this? With this, I wrap up this interview.